Good morning, students. Welcome to an exciting journey of knowledge and discovery. I am C.A. Sanket Shah, your guide in this adventure. With a passion for accounting and commitment to your growth, I am here to empower you, ignite curiosity, and unlock your potential. Let's embark on this transformative journey together, and let's start with our ICI learning. Here we are in batch number 7. I want your cooperation in the process by typing your answers in the application, and you will type it in your application. I will ask you some questions and you will answer me through application. This is a free service provided by the ICI. I hope you will make best out of it. Today is a 12th June and your exam is in December 23. So you left with only, I won't count June month and December month. So July, August, September, October, November. Sir, lectures will held in English only. No friends. Lecture will be 50%, 80% is in English and your revision will be in Hindi. तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये होते हैं कि साउथ स्टूडेंट्स छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स को लगता है लेक्चर्स कैसे होने वाले सर, इंग्लिश में पूरा होगा क्या? Your paper is in English, so lectures are also we are going to conduct it in English, but revisions definitely I will take it in Hindi. So जितने भी हमारे वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भाई बहन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, हिंदी में आपको समझ में भी आएगा, पर थिंक फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके लिए हमें लेक्चर्स इंग्लिश में लेने पड़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट टेल अस how many subjects are here in foundation, sir? From where to get study material? Okay, so सबको पता है? Yes, everyone knows. This is ici.org पे आप जाओगे. Otherwise you can type on Google. तो मैं आपको करके बताता हूँ. I will show you. So Google पे आपको क्या करना है? Yes. BOSS means Board of Studies is BOSS. Knowledge Portal. So BOSS Knowledge Portal, if you type in that, you can click to visit the BOS portal. Here you will get some important news, all your updates. और आप देख सकते हैं here our president, vice president photos भी दिख रहे हैं आपको, chairman, vice chairman. And now here you have to click on, here you can see what we offer. Chartered accountancy course, then you have syllabus, and then you have study material. So you will click on study material. आप study material पे click करोगे. On foundation you will get 4 papers. Sir, papers देख लीजिए. Papers कितने हैं? Principles and practice of accounting, 100 marks paper. Business laws and business correspondence and reporting. Business laws 50 marks. Correspondence and reporting. Business mathematics and logical reasoning and statistics. Business economics and business and commercial knowledge. So your total paper, 4 papers, 2 theory papers, business laws, business correspondence and reporting and principles, and not theory plus practical, 100 marks, not MCQ based, and paper number 3 and paper number 4 are MCQ based. Sir, old course is only applicable for December 2023. हम लोग बाद में चेक करेंगे न्यू कोर्स एप्लीकेबिलिटी, बट फॉर फाउंडेशन अकाउंट्स सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. तो ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कि 100% आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस पार्ट, बट 100% ऐसा नहीं बोलूंगा, बट योर बेसिक्स विल बी सेम फॉर मे एग्जाम ऑल्सो. सो डोंट वरी, नए सिलेबस के लिए आप लोगों को डरना नहीं है. वो आईसीआई, और बहुत सारी अफवाहें होती है सर कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा. आप ये न्यूज से कुछ भी निश्चिंत रह के आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए. फोकस ऑन योर स्टडी. डोंट ट्राई टू लर्न कि ऐसा होगा न्यू कोर्स में ये आने वाला है. डोंट वरी, यू हैव ओल्ड सिलेबस दिसंबर के लिए, और आईसीआई आपको सभी अपडेट्स दे देंगे जब भी न्यू कोर्स आ जाएगा. तो बहुत सारे लोग ये वीडियोस के पीछे देखते रहते हैं कि कौन सा कोर्स है, मत कीजिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सर माय पेपर 100 मार्क्स का पेपर। सो 100 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन पेपर 1 यू कैन सी हियर, and I am CA Sanket Shah. I have teaching experience of last 12 years. Now मैं हमेशा पुणे ब्रांच ऑफ आईसीआई के साथ एसोसिएटेड था। नाउ आई एम एसोसिएटेड विद पिंपरी चिंचवड ब्रांच ऑफ आईसीआई और बोर्ड ऑफ स्टडीज ने, यस थैंक्स टू बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टीज एंड चेयरमैन सबके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। नाउ दिस इज माय 4th या 5th बैच फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर फाउंडेशन लेवल, और आप लोगों का प्यार ऐसे रहने देना तो ताकि मैं और मोटिवेट होके आपको सिखाता रहूंगा। सर कैन वी डिपेंड ऑन दिस बोर्ड ऑफ स्टडीज क्लासेस? 100%, यस। सपोज इफ समथिंग्स लेफ्ट, तो आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा थ्रू सोशल मीडिया। डोंट वरी कि हम लोग जुड़े रहेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन मेल अस ऑन आवर बोर्ड ऑफ स्टडीज पे मेल कर सकते हो। हमारी फैकल्टीज जो है वो आपको रिप्लाई भी दे देगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हमारे ग्रुप्स जो रहेंगे उसमें भी आप पूछ सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स आल्सो, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, फर्स्ट वन सिलेबस के थ्रू आते हैं। इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। चलो अभी मूव करते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। दिस पेपर फोकसेस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोगों को यहां पे दिख रहा है कि फंडामेंटल्स मींस एट फाउंडेशन लेवल यू मस्ट नो व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स। ये आपको पता होना चाहिए। Objective is here to develop your understanding of only basic concepts and principles of accounting. So after foundation, at inter level, one must not say कि sir my basics are weak. You know this is like RCC. यदि आरसीसी खत्म हो गया, खराब हो गया, तो बिल्डिंग नहीं बनने वाली है। तो अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, अप टू सीए फाइनल यू हैव दिस सब्जेक्ट not only at foundation level but also at inter level, also at final level and in your practical life. तो accounts is a subject जिसके ऊपर से पूरा बेस बनता है। इनकम टैक्स होगा या इवन आई विल से कॉस्टिंग, तो उसके पहले आपको what are expenditure that you have to understand, and even for financial management. So accounts is a base of all subjects. Now students will learn how to apply the same in preparing financial statements. Now what are financial statements? It is balance sheet, profit and loss, cash flow statement that we are going to see for non-corporate entities. Sir, corporate entities also we have company financial statement, but at very basic level, application money, allotment money, that I will tell you, don't worry. So introduction ke baad now come to syllabus part. How many chapters are there? See, you have first 5 chapters basically on bookkeeping system. What is journal, ledger, trial balance, subsidiary books? Yes, we will understand it slowly. Then we have inventory valuation, depreciation and bank reconciliation statement in first 5 chapters. Then we have special chapter number 6 in which we are going to see special transaction like consignment, average due date and bill of exchange. ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद चैप्टर 7 डील्स विथ सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स। सोल प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट्स ये आपको रहेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। It's very simple chapter. Then a one big chapter that is partnership, in which we are going to see goodwill valuation, admission, retirement, death, etc. And in chapter number 9, we are going to cover company accounts. Sorry, for first one is non-profit organization, that is NPO. And in last chapter, company final accounts, in which we are going to see issue of shares and debentures. Syllabus is vast. I won't say foundation level syllabus is very easy. Okay. But ultimate hard work, daily 8 to 9 hours study will give you 100% success at foundation level. Sir, refer only and only study material. Don't refer any other material. I am telling you at foundation level, if you know your basics of accounts and if you cover your study material thoroughly, you are not going to fail in exam. In last exam, many of my students, they scored 90+ marks in accounts.
they message me after attending board of studies lecture, I got 300 plus marks, 315 plus marks. In corona, we we started this journey of online classes through board of studies. Remember, board of studies want to develop this activity not only at specific city, this is at all over India level. So you can connect us at from all over India. तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप डायरेक्टली फैकल्टीज के साथ यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़े होंगे। तो आपको स्टडी मटेरियल में भी कुछ दिक्कतें आएगी तो वी कैन टेल यू। ओके, सो आप लोग निश्चिंत होके हमारे साथ ये स्टडी शुरू कीजिए और आज से हम लोग चालू करेंगे यूनिट नंबर 1 पर। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, कंक्लूजन पार्ट। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, फर्स्ट वन, maintain 100 pages book for concepts, formulae and formats for revision right from day 1. Day 1 से आपको ये maintain करना है। Now don't think for today's session. What happens after 15 days? If you go through first topic, everything is blank. आपको कुछ याद नहीं आता है। So this 100 pages book, daily revision will give you confidence in your exam. So आपको क्या करना है आज से, you have to maintain this 100 pages book जो सर ने बोला है, for 100 pages small book for concepts, formula for mathematics और accounts, एंड लॉ के लिए भी यही टेक्निक यूज करना, बीसी के इको के लिए भी सेम टेक्निक यूज करना। ऑलवेज राइट शॉर्ट नोट्स। तो डे 1 से मुझे एक्सपेक्ट है 100 पेजेस का बुक। देन डेफिनेटली वी विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस आफ्टर लेक्चर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। I will tell you how to practice, but you have to practice it by using टिक-टिकी-जी technique. टिक-टिकी-जी timer technique. Timer लगाना है, that is टिक-टिकी-जी. And third one, CA is difficult course. And if you are not consistent, very important point. Sir, consistency मतलब क्या? मन से आवाज आने दो। सीए कोर्स में ना ऐसा कोई बता के बाय लुकिंग इनटू ये संदीप माहेश्वरी के सेशंस और ऐसा कुछ मोटिवेशन या संकेत सर आपको मोटिवेट करेंगे, तो किसी का मोटिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स योर कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। ये याद रखो। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू मेंटेन, ब्लैक पेन। रिमेंबर, ब्लैक पेन इज मैंडेटरी इन एग्जाम। यू कैनॉट राइट बाय ब्लू पेन, ब्लैक पेन बॉल पेन से यूज करना है आपको, जिससे स्कैन हो सके। क्यों ब्लैक पेन यूज करना है? क्योंकि अभी स्कैन कॉपीज आती है, नॉट अपनी नॉर्मल वाली कॉपीज आती है। अभी पुरानी टीचिंग नहीं है या एग्जाम पैटर्न नहीं होता है, सो ऑल ओवर इंडिया में पहले पेपर स्कैन होते हैं और वो चेकिंग के लिए भेजे जाते हैं। सो ब्लैक पेन इज मैंडेटरी। रेड पेन in our classroom. Why? Because all important points I will tell you to write it by red pen. Pencils for drawing purpose, erasers and calculator. अभी कैलकुलेटर के लिए पहले दिन पे बताता हूं। सिंपल वाला कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर यूज करना है, बस इतने ही बटन्स। साइंटिफिक कैल्स इज नॉट अलाउड, बट डोंट यूज कैसियो। ये सिटीजन का यूज कीजिए और पेट का यूज कीजिए। कैसियो में थोड़े फंक्शंस आर डिफरेंट, सो फर्स्ट डे पे मैं बताता हूं। व्हाइल डूइंग दैट रूट कैलकुलेशन, कैसियो गिव्स डिफरेंट आंसर, सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कैसियो कंपनी, बस जस्ट टेलिंग यू कि ये आपको करना है बिकॉज दिस फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। कैल्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूर सीए कोर्स। कैल्सी इज लाइक बेटा आपका हथियार है, यस, इससे आपको जंग जीतनी है। तो कैल्सी अच्छा यूज करो, सिंपल वाला करो, फैंसी कैल्सी मत लाओ। मैं क्लासेस में देखता था ऐसे येलो कलर और ब्लूइश कलर के कैल्सी। सिंपल 120, 140, 150 वाला कैल्सी, गरीबों वाला कैल्सी यूज करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। There is no shortcut today's quote for your success and no excuse for failures. देखो, शॉर्टकट भी नहीं है और एक्सक्यूज मत देना कि यार मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरा कल तो मेरे यहाँ पे शादी था, ये था। प्लीज डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस इन योर सीए कोर्स। एंड लास्ट, टीचर्स कैन ओपन द डोर, ये याद रखो, बट यू हैव टू एंटर यूर सेल्फ। आप मेरे साथ फेस टू फेस में नहीं भी रहोगे,
बट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि मैं सर से जुड़ा हुआ नहीं हूं करके, आप हमेशा मुझे आपके सामने ही देखोगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू एंटर यूर सेल्फ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फ्रेंड्स, आज की जर्नी चालू करते। वी विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 1। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, यस, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो? यू कैन सेंड मी मैसेज थ्रू बोर्ड ऑफ स्टडीज का ऐप। आप मेरे साथ बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप थ्रू जुड़ सकते हो, और हमेशा मैं आपसे जुड़ा ही रहूंगा, और आपके लिए मेरे मन में बहुत सारा प्यार होगा। डोंट वरी, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आप मुझे बताइए। यस, बहुत सारे मैसेजेस है। अभी मैं एक बार ओपन करके आपके क्वेरीज, अरे बाप रे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो सर, कैन वी यूज ब्लैक जेल पेन? हो, ओके सर, थैंक्स फॉर दिस क्वालिटी क्लासेस। यस डेफिनेटली बेटा, राज विश्वास, आपके लिए कुछ भी। सर, आई स्कोर 99 इन अकाउंट्स इन एचएससी, सो सीए फाउंडेशन अकाउंट इज सेम एज। नो बेटा, डोंट कंपेयर विथ योर 12th का सीएस कोर्स का। यहाँ पे थिंकिंग बदल दूंगा। टुडे आई विल चेंज योर माइंड, आई विल चेंज योर व्हाट विजन टूवर्ड्स अकाउंटेंसी। हम लोग बोल सकते हैं कि मैं आज आपका अकाउंटेंसी के टूवर्ड्स का जर्नी पूरा चेंज कर दूंगा। यस, श्रीराम जी जेल पेन के बारे में पूछ रहे थे। सर, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो इट इज डिफिकल्ट टू मी पास द एग्जाम। डोंट वरी दीपांशु, कुछ नहीं होता, हिंदी मीडियम से हो गए। आई एम ऑल्सो फ्रॉम वर्नैक्युलर मीडियम, मैं भी मराठी मीडियम से सीखा हुआ हूँ, बट स्टिल यू कैन सी कि मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्टी गया नहीं है। और इंग्लिश ये बेटा सेकेंडरी है, हमारे सीए कोर्स में 100% इंग्लिश आना चाहिए, जरूरी नहीं है, पर आप लोगों का पेपर जितना भी हो सकता है उतना काफी रहेगा, जितना एग्जाम पास के लिए होगा। और आपको भी पता है कि बहुत सारी नए डेवलपमेंट्स हो चुकी है जो आपके ऑफिस में भी यूज होगी। नो डाउट यू विल नीड इंग्लिश, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप ये मत सोचे कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं कैसे पास करवाऊंगा, हो जाओगे उल्टा। मैं ज्यादा वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हार्ड वर्क कर होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बाकी स्टूडेंट, बट यस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूं कि आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। डोंट वरी। इज देयर एनी नीड टू ज्वाइन ट्यूशंस इफ वी डिपेंड ऑन यूर लेक्चर्स? तन्मय गोयल, 90% नहीं। बट ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आफ्टर फेल्यूर यू विल फाइंड कि नहीं नहीं, हमने तो ये इसके ऊपर डिपेंड किया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली आईसीआई क्लासेस आर बेस्ट। नाउ आईसीआई सिलेक्टेड फैकल्टीज है जो आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं, और हमें भी सब पता होता है कि बच्चों को कैसे पास करवाना है। सो यू कैन डिपेंड ऑन अस, ट्रस्ट रखो। सपोज इफ कुछ चीजें रह जाती है हमारे से, तो मैं आपके थ्रू जुड़ जाऊंगा कोई ना कोई माध्यम से। और क्या है आपके क्वेरीज? तन्मय ने पूछा था, तन्मय ने बहुत बार पूछा ये क्वेरी। तन्मय जी प्लीज डोंट रिपीट सेम 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 क्वेरी, प्लीज ये मेरे लिए आप करो। सिंह जी पूछ रहे, सर दोज हु वांट टू गिव 2024 अटेम्प्ट, डू दे नीड टू स्टार्ट नाउ? यू कैन स्टार्ट सिलेबस आने तक ऑलमोस्ट, बिकॉज बेसिक्स आर सिमिलर। सर मेरी बुक्स नहीं आई, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आईसीआई उसके लिए। सर डज रैंक मैटर्स? सर फाउंडेशन में देर इज नो रैंक, इंटरमीडिएट में यस रैंक मैटर्स। ठीक है, तो सर बीआरएस में बहुत डाउट्स है। अरे बाप रे, बीआरएस में बहुत डाउट्स है, तो वो बाद में देखेंगे बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। यस, चलो अभी मैं आता हूं फर्स्ट चैप्टर के टूवर्ड्स। यूनिट 1, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 1। otherwise yes, we will first start with chapter 2, basics of accounts. Okay, chapter 2 unit 1 से शुरू करते हैं आज। yes, please today you write it on the rough pages, and उसके बाद you can fare it in 100 pages book. I will tell you where to write these entries. 100 pages book and 400 pages book. So you have to maintain two notebooks. One is 100 pages, second one is 400 pages. 400 pages के notebook में क्या लिखना है मैं बता दूंगा। चलो, so we will start with today first chapter 2, because journal entries are there. So I want to start this process. What is the accounting process? Before starting journal entries, first you should know what is your aim in accounts. Why we need accounts? Accounting is a language of business. Correct है? ये language of business. So if I want to communicate with you regarding your business, I will communicate with you only through financial statements. So what is the first word? Sir, today's first word
is a financial. Finance means what? Money related. Finance मतलब क्या होता है? Money related. Financial statements. Sir, financial statements मतलब क्या? What is the meaning? It is balance sheet and mainly there are 5 statements, but mainly we are aware about, yes, science background students, don't worry. So our aim is to prepare financial statements. Now, what is financial statements? It is balance sheet and profit and loss account. Sir, in balance sheet, now please try to understand, there are 2 words, assets and liabilities. And in P&L, we have expense and income. Okay. And capital in balance sheet. So we have assets, liability, capital, and expenses and income in P&L. All these assets together at one place, all liabilities together at one place, and your capital. Capital means amount introduced by businessman. What is capital? Amount introduced by businessman is called as capital. Now let's try to understand one by one word. What is asset? Asset is your, what you can say, from which you can derive economic benefit. एसेट मतलब जिसमें से आपको कुछ इनकम जनरेट होने वाला है. सर, व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज माय प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड माय वाइफ. माय वाइफ बेटा पैसा जनरेट करके ऑफिस में जाती है ना, शी इज ऑल्सो सीए, सो शी इज एसेट फॉर मी. यस, जोक्स अपार्ट. तो एसेट मतलब क्या? एसेट मीन्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एसेट मीन्स फ्रॉम विच यू कैन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स. पैसा जिससे मिलता है, पैसा जिससे मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे एसेट. एंड लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मतलब क्या? व्हाट आई हैव टू पे. सो सैलरी आई वांट टू पे, सो सैलरी पेबल. आई हैव नॉट येट पेड माय सैलरी टू माय पर्सन, तो वो सैलरी पेबल. लोन. फिर current liabilities में creditors, for my supplier I want to pay. Okay, so that is covered under liabilities. And what is capital? Capital means contribution of owner. So your balance sheet is divided in asset, liability, and capital. And your P&L account, now see, asset is different. Asset will help you for more than one period. Okay, you incur expenditure. Sir, I incurred expenditure. Now this is very important. Common man, he doesn't understand what is the difference between asset and what is the difference between expenses. For example, sir, I bought one pen. Pen is a stationery. It's a negligible amount. But I bought one motor car. Motor car, huge investment. So car is having 15 to 20 lakhs investment, and pen is having only 20 rupees investment. So pen, you will consider it as expenses. So common man, he doesn't understand. So what is the difference between expenses and asset? Expenses मतलब जो pocket में से जाएगा और जिसका benefit 1 साल तक है. If you are getting benefit only for 1 year, it is expenses. Okay, sir, I expended, but benefit is only for 1 year. Sir, asset, benefit of more than 1 year. Okay, now I got the difference. So expenditure, it is also outflow. Asset, also outflow, but having 2 different nature. Liability, that I have to pay it back. Capital, owner's contribution. And income, now this tuition fees, professional fees is my income, which I will record it on the credit side. Now balances, I will tell you it later. But first understand, my aim is to show all expenses together and all incomes together, all asset, liabilities, and capital balances in one place, which is called as financial statement. Okay? So write down in the comment section, every one of you, what are financial statements? Balance sheet. What it shows? It's a position statement. Balance sheet is position statement. And P&L is performance statement.
Okay, write down on the rough page financial statements before starting this chapter. Financial statement, balance sheet, asset, liability, capital, P&L. Write down beta fatafat. Capital. Yes, Asta, I will tell you this paper pattern and all. ये श्रवण जी, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस काफी है, आपने पूछा है हिंदी में एग्जाम आ सकता है क्या? केशव कुमार, नहीं बेटा, हिंदी मीडियम के लिए आपको अलग से ऑप्ट करना पड़ेगा बेटा। सर, कैन वी यूज ब्लैक स्केच इन एग्जाम और अंडरलाइन? नो, स्केच पेन्स आर नॉट अलाउड। बैलेंस शीट, एसेट, लाइबिलिटी। सर, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? अमृत जी, विद इन 3 months वी विल फिनिश विद द सिलेबस, डोंट वरी। कैसियो कैलकुलेटर होगा तो यूज कीजिए, बट आई वोंट प्रेफर। बेटा, एक्सपेंसेस मीन्स फॉर विच यू वोंट गेट एनी बेनिफिट more than 1 year होगा तो it is called as asset. Current assets are different, but expenditure means what? तो salary, advertisement which you incurred, it's not for benefit. You can say कि ये क्या होगा? I will tell you grouping current asset, non-current asset, that is a different thing. तो थोड़ा सबर कीजिए, I will tell you exactly the difference when we'll start with journal entries. Okay, so till now you just understand it is asset, liability and capital. In P&L we have expenses and income. Yes, सौरभ प्रजापति बोल रहे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है। होगा बेटा, सीए कोर्स में होता है, डोंट वरी, थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा आपको। So today we are going to start with journal entry. So financial statements you understood. Have you written everyone? सबने लिख दिया बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 100 पेजेस के बुक में लिख लीजिए, फटाफट फटाफट लिख लीजिए बेटा। Yes. Casio calculator is allowed in exam, but I won't prefer Casio calculator because it has some different functions. टैक्स, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि कैसियो कैलसी इज नॉट यूजफुल एंड ऑल, बट कुछ फंक्शंस इट इंटरमीडिएट लेवल यू नीड, तो कैसियो उसके आंसर थोड़े अलग देता है। ओके, विशाल शर्मा, यस बेटा, on my YouTube channel you will get, I am associated with Pimpri Chinchwad branch of ICI. I do not have any private classes. तो आपको मेरे चैनल से या पिंपरी चिंचवड चैनल से या इवन आईसीआई पे चैनल पे भी कुछ चीजें होंगी। गुरु मंत्रा सीरीज आई एम गोइंग टू टेक इट। तो गुरु मंत्रा सीरीज यदि आईसीआई अलाउ करती है तो मैं उसको डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो होगा ही, तो आप उधर से कभी भी देख सकते हो। यस, पर मेरे कोई भी प्राइवेट क्लासेस नहीं है। हाँ, ये मत पूछो। सर, लॉ की क्लास हिंदी में प्रोवाइड हो सकती है क्या? अंजलि जी, लॉ के टीचर के साथ बात कर लीजिए, शायद से आपको लॉ के टीचर इंग्लिश हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन में सिखाएंगे, सो डोंट वरी। सर, शुड वी राइट इट इन 100 पेजेस बुक? यस प्रवीण जी, यू हैव टू राइट इट इन 100 पेजेस बुक। आपको 100 पेजेस के बुक में ही लिखना है। चलो, सो जर्नल एंट्रीज की शुरुआत करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज, राइट डाउन डबल एंट्री सिस्टम। 100 पेजेस के बुक में लिखो डबल एंट्री सिस्टम। Lokesh is asking, sir, is it a new batch? Yes, beta. Lokesh, this is a new batch. Pooja ji, sir, speak in English. No problem, beta. I am going to teach you in English. Only revision part I will take it in Hindi. Okay? Hindi plus English. Don't worry. How to approach the faculties after the class? Yes, beta. We'll do one group. Don't worry. आप लोगों को मैं कुछ तो बोलता हूँ उसके बारे में। और तुषार व्यास, रिप्लाई माय क्वेश्चन। सलमान पूछ रहा है, बेटा सलमान, 1000 प्लस स्टूडेंट्स देयर आर इन लाइव सेशन, सो इट्स नॉट पॉसिबल मैं सबके आंसर्स दे पाऊं, नहीं तो हमारा सेशन ही नहीं खत्म होगा। सो जब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करूंगा। यस वेंकटेश, डोंट वरी, दिस बैच विल कंडक्ट डेली। यस, सिद्धांत बोल रहा है आपके बातों से हौसला बढ़ रहा है। डेफिनेटली बेटा,
100%, डोंट वरी, आपको मैं 80+ मार्क्स मिलवा के दे दूंगा. ओके, this is only scientific method of accounting. Now sir, double entry system. Now Luca di Pacioli, that is an Italian person, I don't know exact pronunciation, Luca di Pacioli, that person has derived two-fold effects. So two-fold means what? So for counting purpose, we have recorded one item on left side and one item on right side. Okay, so he derived double entry system. Now what is double entry system? We are going to see some rules of accounts. We are going to pass some entries also. Don't worry. तो हम लोग जब ये entries pass करेंगे, you will understand what is double effect system. So write down. This is scientific method of accounting. ये लिख दिया. And two-fold effects. Write down. Two-fold effects. Transaction. Now what is transaction? That is unit number 1. But transaction has two-fold effects. Debit and credit. Debit and credit. Now what is debit and credit? Debit means, in simple language, if we record it, your debit side is more. So he derived rules of accounts, and these rules of accounts, by applying it, you have to give debit and credit effect. Okay, understand? Just write down it. Science background students, debit and credit means simple principles of recording all transactions. Okay, so debit credit matlab science background students, don't worry, it is only two effects that we are going to give, debit and credit. Okay, chalo. So now what are types of accounts? Types of accounts are divided in two parts. Traditional approach. Traditional approach. अभी traditional approach क्या है? Personal, real, and nominal. Traditional approach is divided in three parts: personal, real, and nominal. Whole transaction, any economic transaction is divided in three parts: personal, traditional approach, and I am follower of traditional approach. I am not follower of modern approach. Every debit has a credit. ये मुझे अच्छा लगता है. But some people follow modern approach. बहुत से people, मतलब ऐसा नहीं है. If you ask my wife, she will follow modern approach: asset, liability, expenses, income, capital. But accounting सीखना है. If you want to learn accounting, always go through traditional approach. You must have grip over the traditional approach. Okay, so I am a follower of traditional approach. Okay, personal account. Now personal. See, traditional approach क्या बोलता है? Whole accounts is first understand, then we will write together. So don't write it now. First focus. Personal account is due relationship. Any relationship starts with any accounting relationship. Don't take it negative relationship. Okay, so दूसरा कुछ मत लीजिए. Due relationship से शुरुआत होती है. Personal account always start with due relationship. Now what is due relationship? Understand first. Due relationship. Due means when I sold goods. When I sold goods, tell me अमाउंट इज रिसीवेबल. आपको पास पैसा आने वाला है, पैसा गुड्स बेचे तो पैसा मिलेगा या पे करना पड़ेगा? बट ऑब्वियस सर, ये क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो? अमाउंट इज रिसीवेबल. सोल्ड गुड्स, सो अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम काउंटर पार्टी. काउंटर पार्टी मतलब अपोजिट पार्टी. आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, so amount is receivable from Mr. X. Now what is amount is receivable? Receivable मतलब debtor. Receivable मतलब accounting भाषा में इसको बोलते हैं debtor. Okay, so debtor means amount is receivable. Amount is receivable मतलब debtor. And when I purchase goods, amount is payable. Payable. So payable means he is our creditor. अपना कौन है ये? creditor. Payable. Whenever amount is payable, creditor. चलो 5 बार. कोई भी चीज याद रखने है तो 5 टाइम्स बोलने का. जो रिटेन करना है, संकेत सर 5 बार बोलने लगाएंगे. एंड जोर जोर से घर पे बोलना. स्पीक लाउडली एट होम. ओके, चलो. यस, स्पीक लाउडली. रिसीवेबल is a debtor. Payable is a creditor.
Receivable is a debtor. Payable is a creditor. Receivable is a debtor. Payable is a creditor. Receivable is debtor. Payable is a creditor. And receivable is a debtor and payable is a creditor. Okay, sir. चलो write in the comment section फटाफट. चलो ऐप में लिखो फटाफट. Receivable means debtor. चलो राइट डाउन इन ऐप लिखो. चलो फटाफट. कम टू BOS ऐप. आप लोग इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ. एवरीवन लेक्चर यू हैव टू सी थ्रू द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप. ऐप में जाइए. यू रजिस्टर योर नेम. एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए. यस, डोंट लिसन ओनली दिस लेक्चर. ट्राई टू टाइप ऑल दीज आंसर्स इन कमेंट सेक्शन. तो याद होगा. लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए. यस, चलो आ जाइए जल्दी से. चलो 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 फास्ट. चलो बहुत बढ़िया बेटा. आज के सेशन में आपने रिकॉर्ड तोड़ किया है. आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो, मेरे साथ जुड़ने वाले हो. यस, विल कीप वन टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर देंगे 2-3 दिन में. सो प्रॉपरली यू कैन. आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टीज को तंग मत करते बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए. तो हम लोग उसके थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल थ्रू. तो आपके कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे तो अदर स्टूडेंट्स विल आंसर इट. ओके, एक अच्छे से करोगे. यस, चलो 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 चलो. रिसीवेबल इज अ डेटा. वेरी गुड वेरी गुड. मोहम्मद जी, अंजलि जी, आदित्य, सात्विक दास, तुषार व्यास. चलो फास्ट. चंदना जी, आयुष जी, केशव, पल्लोबी, यश, वृंदा. Many students answered it. So payable means creditor, receivable is a debtor. Payable is a creditor, receivable is a debtor. And when receivable, when you sold goods. सर ये भी दिमाग में रखो. Sold debtor, sold debtor. बेचा पैसा आएगा. Purchase creditor, purchase creditor, purchase creditor. Okay, sold debtor, sold debtor, sold debtor. Okay. Sir, attending through web portal. Yes, beta. Aman ji, no problem. You can message me. I can see your comments. तो वो काफी है. ये क्या है यार. एक ही मिनट बेटा. ओके, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट रूल, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द डेटर. व्हेन डेटर बेटा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, and credit the creditor. Now this is rule which is derived by beta that Luca di Pasole. I am not the this rule maker. Rule कोई अलग ने बनाया. We are just followers. We are follower of this rule. तो creditor कब आएगा बेटा? When we purchase goods. जब हम लोग goods को purchase करते. So write down personal account, due relationship, and then receiving giving relationship. Now what is receiving giving relationship? So beta when he pays us, जब debtor will pay me money. Okay, चलो इधर. Now debtor को हमने debit दिया of 1000 and he paid me X paid rupees 800. 200 he will pay afterwards. So X paid me rupees 800. So he is giver. Okay, and giver has credit balance. When we sold goods on credit, udhari, sold goods on credit. Credit means udhari. When we sold goods on credit, he is my debtor. And when he pays money, he becomes giver. So debtor becomes, yes, write down, understand it. Debtor becomes giver and see, creditor becomes receiver. Yes, creditor becomes receiver when we pay him. Okay, when only purchase sale. When purchase sale transaction, expenditure income transaction, then debtor creditor. And when he pays us or we pay him,
he becomes giver receiver. So when transaction is settled, मैं वापस एक बार हिंदी में बताता हूं. When we enter, जब हम लोग उधारी में एंटर करते, मैंने आपसे कुछ उधारी पे माल खरीदी किया 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए का माल खरीदी किया तो मुझे आपको पैसा देना है, तो यू आर माई क्रेडिटर. और मैं जब आपसे आपको माल बेचता हूं और आपसे 500 रुपए मुझे लेना है, यू आर माई डेटर. यू आर माई डेटर. एंड जब आप मुझे पैसा दोगे तो यू विल बिकम्स गिवर एंड क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर. तो रूल क्या अप्लाई करना है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल्स. रूल क्या अप्लाई करना है? डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी सेटल द अमाउंट, debit the receiver and credit the giver. Who was giver? Debtor becomes giver. तो उसका अकाउंट 0 हो जाएगा. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. सर थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा. स्टार्टिंग में you will find problem. But once you understood these rules, 2 + 2 4 कैसे याद आता है? हाँ, बट वही 29 into 7 इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 2 + 2 बहुत बार रटा हुआ है. वी बाय हार्ट दैट रूल 2 का टेबल, सो वी नो इट इन डिटेल. बट बेटा दिस अकाउंटिंग रूल्स आर ऑल्सो यू रिक्वायर्ड इन योर फ्यूचर 100%. तो आज इसको रट लेते हैं. वी विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली और उसको याद कर ले. वी विल मेमोराइज दिस रूल्स ऑफ अकाउंट्स. चलो, सो ड्यू का रिलेशन, ड्यू लो, जल्दी जल्दी बोलो, 5 बार बोलना है. डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. When due relationship, due means उधारी, and settlement जब होगा तब receiving giving relationship. Whenever there is settlement, तो due relationship चलो 5 बार बोलो. Debit the debtor, credit the creditor. 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 Sir, over. Receiving giving when there is a settlement. Debit the receiver, credit the giver. 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 Debit the debtor, credit the creditor. Debit the debtor, credit the creditor. Debit the debtor, credit the creditor. Everyone write it in the notebook now. Okay, चलो आप बोलते रहो और लिखते रहो. चलो, personal account write it in your notebook. Traditional approach, first write down traditional approach. Traditional approach में number 1, how you are going to write? See, write it in this way. Approaches divided in 2 parts. Traditional, मॉडर्न. ट्रेडिशनल में पर्सनल, रियल, नॉमिनल. मॉडर्न में लिखो एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, इनकम. एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, इनकम. चलो, अप्रोचेस यू अंडरस्टूड. चलो, टेल मी इन कमेंट सेक्शन हाउ मेनी अप्रोचेस आर देयर. चलो कनेक्ट करो जल्दी जल्दी, सब लोग लिखेंगे. प्लीज डोंट गिव अप. पहला ही सेशन है, आज ही मत गिव अप करो. लिखो, याद करो फटाफट. ट्रेडिशनल अप्रोच. चलो, ट्रेडिशनल अप्रोच राइट डाउन. हाउ मेनी रूल्स? 100 पेजेस के नोटबुक में लिखना है, 100 पेजेस के बुक में. Approaches: traditional approach, modern approach. Personal, real, nominal. Personal, real, nominal. Very good, very good. Traditional and modern. Traditional में लिखो personal, real, nominal. चलो, now first rule write down. Personal account. कोरोना ने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है. देखो, फेस टू फेस क्लासेस का प्रॉब्लम ये होता है. आई विल टेल यू सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड सम नेगेटिव पॉइंट्स. फेस टू फेस क्लासेस, व्हाट नॉर्मली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, गोइंग आउटसाइड, वापस से स्टडी पे आना, फ्रेंड सर्कल, बहुत टाइम पास. इन फेस टू फेस लेक्चर्स, ओके, एंड इन बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप थ्रू बेटा यू विल सेव योर टाइम, एनी टाइम एनीवेयर लिखा हुआ है हमने. सो
आपका टाइम सेव हो जाएगा. इवन यू विजिट बेटा आउटसाइड पुना, सॉरी आउटसाइड योर प्रीमाइसेस हो तो भी यू कैन सी वॉच आवर सेशंस, यू कैन वॉच आवर सेशंस आफ्टरवर्ड्स रिकॉर्डेड में, एंड यू कैन इंटरेक्ट अस विथ अस एनी टाइम. ओके, सो ये फायदे है, बेनिफिट है फॉर दिस ऑल ओवर इंडिया के लेक्चर. फैकल्टीज आर रियली गुड, ऑल फैकल्टीज फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, एंड आईसीआई के वही फैकल्टी सोच समझ के रखते हैं. ओके, पर्सनल अकाउंट. चलो, फर्स्ट वन, due relationship. Now, what is due relationship? Due means, if you want to write it in Hindi, you can write over there udhari on credit. Due means on credit, udhari on credit. Okay, due relationship. Now, what is due relationship? Debit the debtor. अभी डेबिट मतलब डेटर. डेटर मीन्स व्हाट? रिसीवेबल. रिसीवेबल जब आप गुड्स सोल्ड करोगे, सोल्ड सोल्ड होगा तो रिसीवेबल आएगा. When goods are sold, that party is your debtor. Credit, the creditor. Payable, when you purchase something, when there is expenses, so you have to pay. So due relationship and credit the creditor. First relationship is over. Now settlement. Now second one, settlement. Settlement होगा तो debit the receiver. Who becomes receiver? Creditor becomes receiver. Creditor becomes, when we pay him, he will collect the amount, he will get the amount, so he becomes receiver at the time of settlement. And credit the giver. Sir, in books we have only this rule. ये रूल कौन से भी बुक में नहीं है. That is the problem. But normally we have only one rule: debit the receiver, credit the giver. But remember, relationship starts with udhari, credit, and therefore debtor creditor relationship. First we start with debtor creditor and then becomes receiver and giver. So who becomes giver? Debtor becomes giver. So minimum 5 times ये lines याद रखो, पूछ दो दिमाग में, पूरे लाइंस को याद कर दो. ड्यू रिलेशनशिप एंड सेटलमेंट का रिलेशनशिप. ओके, हाँ श्रुति. श्रुति, focus on study beta. Sir, what about first chapter beta? We are going to take that first chapter today itself, in the last 20 to 25 minutes. So first chapter plus second chapter is more important because basic rules are very important. So today we started with basic rules of accounts. So personal account, everyone understood what is personal account? Everyone clear with the personal account? Sold मतलब क्या होगा? चलो जल्दी से, कुछ क्वेश्चन है मेरे. सोल्ड होगा when goods are sold, तो डेटर आएगा या क्रेडिटर आएगा? Tell me fast in comment section. Let's see who is giving a fast answer. Who is giving fast answer? Yes, Inaya, she has written, sir, there are two approaches. First is traditional, second is modern. In traditional approach, personal, real, nominal, very good. And in modern, asset, liability, expenses, income, and capital. Yes, personal का due rule, relationship, debit the debtor, credit the creditor. And second one means there is a settlement, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Very good, very good, very good. So सबसे पहले किसने तेज आंसर दिया? बहुत तेज हो, अमन अंदानी, सॉरी. सो अमन ने सबसे फास्ट आंसर दिया. ओके, चलिए. सो ही आंसर्ड वेरी फास्ट. अमन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. चलो, फर्स्ट रूल इज ओवर. एवरीवन अंडरस्टूड फर्स्ट रूल. सो सोल्ड किया तो डेटर आएगा, डेटर बिकम्स गिवर. सो डेबिट, देन ही क्रैश विथ क्रेडिट, सो उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा. व्हेन ही सेटल्ड हिज अकाउंट, ही डज नॉट हैव टू पे. सो डेबिट होगा तो देखो इधर अमन से मुझे, सपोज इफ आई सोल्ड गुड्स टू अमन, सो अमन टू सेल्स, and when I received cash, I will write by cash 800. So Aman account gets, now here he is a giver and here he is a debtor. Here he is a debtor, then he becomes giver when he settled the amount. And now I left with only 200 rupees. So receivable from Aman is only 200. So this relationship is very, very important while passing entry. Second rule, chalo, second one. Now second rule, personal, real, real का. Now real is related to things. रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट इज ऑल्सो कैरीड टू बैलेंस शीट. स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आर कैरीड टू बैलेंस शीट.
So real account, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. So plant and machinery, furniture, land and building comes in. And when I sold it, cash comes in, cash goes out. Okay. So what comes in and what goes out is a real account. And last one, chalo, likho, real account ka rule, real account rule, real account, debit what comes in, credit what goes out. Simple che, debit what comes in, credit what goes out. Yes, very good. Yes, very good. Debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, very good. तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट. सी नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू पी एंड एल. रियल अकाउंट किधर आते हैं? बैलेंस शीट में कैरी होते हैं. पर्सनल अकाउंट आर कैरीड टू बैलेंस शीट. Nominal accounts are transferred to P&L. See the word transferred because it balance becomes zero. In ledger accounts, I will tell you. Transferred to P&L. So P&L में जो जाएंगे वो nominal accounts. Debit all expenses. Expenses means which is out of your pocket. Expenses मतलब out of pocket. जो पे करने वाले हो. और incomes. And लिखेंगे credit all incomes and gains. So depreciation is my loss. It is not out of pocket. Salary is my expenditure. Depreciation is loss. Incomes and gains. Nominal accounts debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Write down. Over, please write it in comment section, sir, over. So I will move to next approach after traditional approach. So whenever you are passing entry, you have to bifurcate in personal, real and nominal for traditional approach. ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल. ट्रेडिशनल का रूल, यस, वन मोर टाइम प्लीज स्पीक लाउडली. पर्सनल अकाउंट, ड्यू रिलेशनशिप, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेटर becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out. And nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay, so nominal accounts ये P&L में जाएगा, personal and real account ये balance sheet में जाएगा. Now what about modern approach? Modern approach में we will divide asset, debit balance. Debit side is more of asset. Okay, now what is debit balance? Remember, Sip, I will tell you it in ledger. What is debit balance? Liability, credit balance. Liability को कौन सा balance होता है? Credit balance. Okay, every debit has a credit. Dual aspect concept. Every debit has a credit. Every debit has a credit. Okay. So capital को कौन सा balance होता है? We write it on the credit side. So it has a credit balance. So just note down it. I will tell you in ledger what is debit and credit. Then expenses, debit balance, and income, credit balance. So write down. फटाफट लिखिए. Asset, modern approach. चलो अभी modern approach लिखो. Modern approach. Now in this batch, I'm going to explain you through modern approach also. Okay, both approaches से explain करूंगा. In previous batches, I never explained modern approach, but in this batch, I'm going to explain it through modern approach also. Asset, real account का example. See, personal account का example क्या है? Personal account, Mr. X, Y, bank, company are personal account. Real account, you can write here things. Things मतलब क्या? Plant and machinery, cash, then you have land, you have furniture, then you have, yes, any other asset. Investment is real account. Nominal account means your expenses, salary, advertisement. These are examples. Now tuition fees is my income. So tuition fees, professional fees are my income. Okay, purchases, sale. Purchase is expenditure, sale is income.
So purchases is a nominal account, sale is nominal account. Over. मजा आ रहा है आपको? आर यू एंजॉइंग बेटा? यस, आउटस्टैंडिंग, वेट वेट वेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है? थोड़ी देर रुको, सबर करो। एक ही दिन में रजनीकांत बनना है क्या? नॉट वन डे में कोई रजनीकांत नहीं बनता है। ओके, मॉडर्न अप्रोच, राइट डाउन एसेट, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल, credit balance. Therefore, see what is the equation? Asset is equal to credit plus capital, है ना? Liability credit, capital credit. Liability plus capital is equation. Then income, credit balance, and expenses, debit balance. ये तीनों किधर जाते हैं? बैलेंस शीट। ये तीनों की जगह है बैलेंस शीट। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर्ड टू P&L. Okay, so this is modern approach. So write down modern approach. Very good बेटा, वेरी गुड। चलो, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, यूपे पे जाके। एवरीवन, if you understood all these concepts in detail, चलो, income minus expense is profit if your income is greater than expense. If expenses are greater than income, then it's your loss. And this profit and losses बाद में किधर कैरी होंगे? These are transferred to capital. Profit और लॉस कौन शेयर करेगा? Profit और लॉस will be shared by capital owner. Owner means capital. Owner means capital. नहीं 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 श्रुति, नॉर्मल पेन से लिखना है। लाइक बटन बाद में यूट्यूब पे जाके प्रेस करने का, आईसीआई ट्यूब पे जाके। हर्षिता इज सेइंग सर थैंक यू फॉर दिस क्लासेस, थैंक यू बेटा। अभिरूप इज आस्किंग मी बॉस ऐप में लॉग इन कैसे करें? ऑलरेडी यू लॉग इन बेटा, दैट्स व्हाई यू सेंड मी क्वेरी। यस बेटा, आई कैन सी योर कमेंट्स। गुनगुन जी, चलो, ओवर एवरीवन। So yes, now you are 100% aware about basic rules of accounts. So how many rules of accounts are there beta? Please 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 इसको दिमाग में ना 100% डाल दो. This is very 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 fundamental of your accounting course. If you have grip over these rules of accounts, no one, yes beta, will get the less than 40 marks if you know basic rules of accounts in detail. ठीक है, यदि आपको ये रूल्स आ गए ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इसके रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बाद एंट्री करने से रोकेगा। सो आपको फर्स्ट यू हैव टू पुट डाउन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स एकदम से जोर जोर से बोलना है। बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट वन क्या होगा? ट्रेडिशनल रूल। चलो ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल रूल में सर पर्सनल अकाउंट पर सब पहले दिन आप इतना ही ले रहे हो, अरे बेटा ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये ध्यान में रखो, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट वन पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द ड्यू रिलेशनशिप कब आएगा? व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी। सो सोल्ड मतलब क्या? डेटर, डेबिट द डेटर, जब मैं माल बेचूंगा तो डेटर रिसीवेबल, क्रेडिट द क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर कब आएगा? व्हेन आई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सो डेटर बिकम्स गिवर एंड क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर। सो दूसरा रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिटर अपोज में एंड डेटर के अपोजिट इफेक्ट। ओके, डेटर बिकम्स गिवर, क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Then modern approach में we have put down in the 5 figures. modern approach में क्या बोलता है? asset, liability, expenditure, income and capital. asset debit balance, liability credit balance, capital credit balance, income credit balance, expenses debit balance. over. बस 1 मिनट का सिखाया, सिर्फ 1 मिनट का। रिवीजन इज ओनली इन 1 मिनट। चलो 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 फास्ट। अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड?
100 पेजेस के बुक में सर अच्छे से समझ में आ रहा है? राज पंडित सिंह सर, कैन फाउंडेशन बी क्लियर बाय ऑनलाइन क्लासेस? 100% बेटा, 100%। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ जाते हैं एंड आई विल बी विथ यू अप टू डिसंबर, डोंट वरी। चलो अभी हम लोग आते हैं कुछ रूल्स ऑफ अकाउंट्स पे। रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बाद ओके अभी कुछ double entry system is accuracy can be established, profit or loss can be ascertained, financial position, that is balance sheet, permits all necessary informations and significant information and facilitates comparison of financial statement. Yes, we are aware about that. What is the accounting equation? Asset is equal to capital plus liability. Now what is capital? We will see it later. Let's have a look on some illustrations. So now we'll try to understand some transactions. स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, बाद में कॉपी करना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5,000. सर नाउ हाउ टू पास एनी जर्नल एंट्री? First one, we will pass it by traditional approach. Approach number 1 is a traditional approach. सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में you have to identify accounts. What is the first step? Identify accounts. See these steps. Steps देख लीजिए. सबसे पहले क्या करना है? You have to identify these accounts. Then you have to identify type, and then apply rule is a last process. Identify accounts. Cash account and R's capital account. दो अकाउंट्स कौन से रहेंगे? याद करो, कैश अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट. सो दो अकाउंट्स याद करने. कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? कैश एंड कैपिटल. आर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5,000. So cash and capital, R person, and R is owner of the business. So we will use the word R's capital. Very simple. R का capital हमें use करना है. Okay. Don't pass entry directly when you are in learning phase. Okay. जब आप learning phase में हो, direct entry करनी नहीं है. First, identify accounts. So slowly we'll try to understand the entry. First, we will apply the logic. Cash account and R's capital account. Cash कौन से टाइप का अकाउंट है बेटा? Cash is a real account. You can see here, cash is a real account. And R's capital is a personal account. सर अब भी सीखा है ना, real, personal, nominal. Now apply the rule. So business में पैसा comes in होगा. Business में cash comes in. Debit, real, debit what comes in. And capital, beta, we have to pay him back afterwards. Now here you can use the rule creditor also. According to me, creditor is more appropriate because we have to return this money. Na? R is though he's owner, but we have to return this money to him. So he is my payable. उसको पैसा future में मुझे देना पड़ेगा. Or you can write it as giver. Both approaches are correct. Giver is also correct, creditor is also correct. Don't worry. So creditor लगाओ या giver लगाओ, कोई matter नहीं करता है. So here rule is debit what comes in and credit the creditor. And therefore entry is, now you can check the entry, cash account debit to R's capital. एकदम easy. एक काम करना है, screenshot ले लीजिए. You can write it in your 400 pages book. Now don't write it in 100 pages book. ये 400 पेजेस के बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 आई विल टेल यू हाउ टू राइट दिस. ओके, 400 पेजेस बुक कैसे मेंटेन करनी है? सी 400 पेजेस की बुक आपको आज मेंटेन करनी है. हाँ, फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट इंडेक्स. मेन इंडेक्स मीन्स ऑन योर फर्स्ट पेज, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, and then page number. For example, you started with chapter 2. Chapter 2 से आपने शुरुआत की. Unit 1. Chapter 2, Unit 1, journal. Page number, assume your 4th page to dash page. I don't know. This is your first index page on the first page. Okay. Now बेटा 100 पेजेस के बुक में नहीं लिखना है, 400 पेजेस के बुक में लिखना है. Today you write it in the 400 pages book. Okay, so my lecture next session will be
on Wednesday को है ना मेरा next session. हाँ, तो then मुझे I want your notebook. हाँ, I want your notebook on that day. 400 pages and 100 pages book. Then your index, chapter index. Now this is chapter 2, inner index. Now this is inner index. Chapter 2, unit 1, journal. Now this is your inner index on 4th page or 3rd page, whatever the page number. Illustration number, page number. Page number means your answer page. Remarks of that question. And I want category. Category means question easy, difficult. ये category होगा. Suppose A category must question, best question. B category average. C category below average. And Z category फालतू, worst question. Anyone can solve that question. This is a Z category. A highest level, Z lowest level. A, B, C, and Z. 4 categories. So now illustration 1. Now page number. Leave 2 pages for index. Index के लिए 2 pages छोड़ दो. Index के लिए, ये index के लिए, ये inner index है. Main index, first page of your notebook. Inner index for every chapter. Inner index for every chapter. Okay? Chalo. Yes. So after that, write down ILU 1. ILU 1. Study material का page number. Illustration 1. Page number. Study material. Now your study material, beta. 1 second. स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है ओके 2.7 सो 2.7 ठीक है. ट्रांजैक्शन नंबर 1. व्हाट इज ट्रांजैक्शन नंबर 1? एक काम करो. नाउ डू वन थिंग. राइट डाउन आइडेंटिफाई अकाउंट्स. Write down identify accounts. So first try to understand. Identify type, apply rule, and last में entry. Draw for 2 pages. 1 page. 1 page pro forma. 1 page pro forma. In exam, I will tell you the technique. This is understanding technique. Don't write this technique in exam. This is understanding technique. Understanding technique. In exam, you have different technique. Number one. What is first transaction? R started business with cash. Write down. R started business with cash. How many accounts are there, beta? Cash account, R's capital account. Cash account, R's capital account. कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल. कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल. एंड आर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल. आइडेंटिफाई अकाउंट्स कैश एंड आर, रियल एंड पर्सनल. रूल, कैश कम्स इन, so debit what comes in, credit the creditor, or you can use giver. And what is the entry? Cash account debit. So this is how you have to write. And two thoda sa leave some space and then write 2
Ars capital. This is how you write the entry. Okay, this is understanding technique. Chalo, draw one line. Yes, note down fast and write in comment section over. Write it in comment section over. कमेंट सेक्शन में लिखो ओवर. महिमा. यस. हाउ आई एम गोइंग टू चेक योर नोटबुक? मुझे बताओ. इट्स योर सी सीए इज अ कोर्स नाउ. यू आर नॉट बेटा child of 10th standard or 5th standard or 7th standard. Now this is actually self motivation course है CA. तो आपको ये अच्छे से आपको खुद को मेंटेन करना है, which will help you afterwards. If you don't maintain your notebook properly, how you are going to revise it? So ये बहुत easy question था कि सर आप नोटबुक चेक करोगे क्या? नो बेटा, इट्स योर ओन ड्यूटी. मैं चेक कैसे कर पाऊंगा इधर पुणे में बैठ के? आई एम फ्रॉम पुणे. हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन होगा. He purchased furniture. He purchases furniture. Now you only tell me कौन से दो अकाउंट्स है. चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ. I will check only one answer. Who is going to fast write the answer fast? Yes बेटा, कौन फास्ट आंसर देगा बताते हैं. सर नरेशन बाद में. यस. कौन बताएगा दो अकाउंट्स? ओनली टू अकाउंट्स. सर इनर इंडेक्स बाद में. इंडेक्स में बाद में लिखेंगे. After 2 pages you are writing this. Inner index is beta for your, see what is inner index. When I want to revise this chapter, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा? सी मेरे इसमें मैं बताता हूं आपको. तो ये देखो, ये मेरा इनर इंडेक्स होता है. ये मेरी नोटबुक है. एज्यूम करो ये मेरी नोटबुक है. ये मेरा इनर इंडेक्स है. ये देखो, दिस इज माई इनर इंडेक्स. चैप्टर 1 chapter unit 1 journal entries, serial number 1, page number. Paid salary to clerk is difficult entry. Category C category. C category मतलब not average question था. So this is how we are going to write our inner index. Understood? चलो. He purchased furniture for 1,200. हाँ, सो राइट डाउन नाउ. मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया. चलो. सेकंड वन, ही परचेस फर्नीचर लिखा. आइडेंटिफाई अकाउंट्स. विच टू अकाउंट्स बेटा? आइडेंटिफाई अकाउंट्स में, आइडेंटिफाई अकाउंट्स में व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? एक ही मिनट. हाँ, आइडेंटिफाई अकाउंट्स में बताओ. फर्नीचर, कैश, टाइप रियल, रियल, अप्लाई रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश.
second entry over, second transaction over. See here, मॉडर्न अप्रोच बाद में देखेंगे. Furniture cash, real, debit what comes in, credit what goes out, and furniture account debit to cash. चलो 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 fast. Have patience till last minute, ah beta. Patience till last minute. Third one. Paid salary to clerk. Write down. Third transaction. Paid salary to clerk. Which two accounts beta? चलो बताओ. बैंक भी चलेगा. कैश नॉर्मली 20,000 से ऊपर होगा तो बैंक लिखते हैं हम लोग. नॉर्मली 20,000 कैश और बैंक लिखो. कैश ही लिखना अभी. कैश और बैंक. बैंक भी लिख सकते हो. यस, बैंक इज ऑल्सो करेक्ट. थैंक यू अब्दुल जी. हार्दिक यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर सकते. नहीं बेटा, यूट्यूब पे नहीं कर पाएगा. पेड सैलरी टू क्लर्क. चलो. यस बेटा, मिस आर. हाँ, सैलरी एंड कैश. सैलरी एंड कैश. सैलरी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट. सैलरी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट. क्लर्क अकाउंट नहीं आएगा. हाँ, कैश अकाउंट, बिकॉज यू पेड हिम. पेड सैलरी टू क्लर्क, तो डोंट ओपन क्लर्क अकाउंट. रेड पेन से लिखना, डोंट ओपन क्लर्क अकाउंट. सो स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक, दे राइट क्लर्क अकाउंट नहीं लिखते, क्लर्क अकाउंट लिखते. सैलरी एंड कैश, टू अकाउंट्स. सैलरी एंड कैश. नाउ इन फ्रंट ऑफ सैलरी बेटा, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? नॉमिनल अकाउंट. एंड रियल अकाउंट के आगे, हाँ सॉरी, नॉमिनल अकाउंट तो लिख दिया, सॉरी. डेबिट expenses. This is not loss. You will pay salary. So depreciation is loss. Okay. Salary payment होने वाला है. So it is expenses out of pocket. And cash what? Goes out. So entry will be salary account debit to cash account और bank account. Cash और bank दोनों correct है. ICI सर, ICI ने क्या किया आप बताते हो ना. ICI ने क्या किया पूछते हो फिर. Salary एंड बैंक लिखा है. बोथ आर करेक्ट. कैश भी करेक्ट है, बैंक भी करेक्ट है. बट वेन एवर अमाउंट इज मोर देन 20,000 तो यू कैन राइट 20,000 के ऊपर होगा तो बैंक अकाउंट. ओके, 20,000 के ऊपर होगा तो बैंक अकाउंट. नॉर्मली यू हैव टू मेक अ पेमेंट थ्रू बैंक. नेक्स्ट वन, रेंट पेड. आज क्लास में 120 तक लूंगा, बीच में ब्रेक दूंगा 5 मिनट्स का. अब आवर लेक्चर विल बी अप टू 120 डेली. सी सिलेबस इज वास्ट और आई हैव टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस. सो रेडी फॉर बेटा, प्लीज रेडी फॉर दिस सेशंस. तो हम लोग 120 तक लेंगे डेली बेसिस पे. वेरी गुड, वेरी गुड. रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट. वेरी गुड. रेंट इज नॉमिनल and cash is real. Science background students, is it easy? Please watch this lecture once again to have concept clarity. Nominal का rule क्या है? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So rent is my expenditure. I'm going to pay it. Rent. And credit, cash goes out. Debit what comes in, credit what goes out. So entry will be rent to cash, or you can write rent to bank. Both are correct. Both are correct. More than 20,000, then bank. Very good, beta. Subhadeep, very good. Furniture purchase, Jinal, you are wrong, beta. Purchases and furniture wrong accounts. Furniture and cash account होगा. Purchases is a goods होगा तो purchase account आएगा.
गुड्स अकाउंट होगा तो परचेस, यू परचेस गुड्स और यू परचेस फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट होगा. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. डोंट ओपन परचेस अकाउंट. रिसीव्ड इंटरेस्ट. यस बेटा विशाल, काफी है. स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी है. यस बेटा, बहुत है. रिसीव्ड इंटरेस्ट. रिसीव्ड इंटरेस्ट. सो व्हाट आर टू अकाउंट्स बेटा? कैश और बैंक. Yes, Abhimanyu, you can prepare it one more time. I already have your past sessions. You can prepare it for these batches. You can write it again. Cash and interest. टेस्ट बेटा मैं प्राइवेट में, मैं पिंपरी चिंचवड़ थ्रू आपकी टेस्ट लूंगा. वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस रहेंगे. तब मैं आपके साथ, हिंदी में बैचेस चाहिए तो पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच को कांटेक्ट करना. कैश रियल नॉमिनल. कैश कम्स इन, interest income. So entry will be cash account debit to interest account. Cash account debit to interest account. Cash account debit to interest. So we have completed all these rules of accounts by using basic debit credit rules. Today's homework, illustration 4, 5, 6 is your homework. Don't try to solve second illustration and third illustration. Same way mein you write it on rough pages. Okay, so you have to finish this illustration आज सेम तरीके से. So today you have to think for ILU 3, 4, 5. I am going to prepare your Telegram channel. Don't worry. हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे. I will give you put down some test for my subject. I won't assure you for other subjects, but yes, हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे. मैं पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेता हूँ और हम लोग इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे. यू कैन देखो, पीओएस फैकल्टी को बहुत सारे क्वेरीज आप लोग भेजोगे तो वो भी पूरे आंसर्स नहीं दे पाओगे. सम क्वेरीज आर इररिलेवेंट. तो फॉर दैट, सपोज इफ यू एनी क्वेरी, हाँ वैल्यूएबल क्वेरी होगा तो आई कैन आंसर इट. बट बेटा एकदम फालतू क्वेरीज होंगे तो यू कैन सॉल्व अमॉन्ग यूर सेल्फ. तो वी विल प्रिपेयर दैट ग्रुप फॉर यूर इंटरेक्शन पर्पज. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू दैट ग्रुप. सो डोंट वरी, आप उसमें जुड़ जाना. और हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूर बेसिक क्वेश्चन जो होंगे विच आर वेरी इजी, और डेली टारगेट्स आई विल गिव यू. तो उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, डेली रिविजन्स भी कर सकते हो. ओके ठीक है. सो वी हैव फिनिश विद द ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर. सो अभी के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे. मतलब आफ्टर ब्रेक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. मॉडर्न अप्रोच एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व वन यूनिट. आई नो नाउ यू आर हंग्री. 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. 5 भी नहीं, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो एंड 12:32 को हम लोग ज्वाइन होते हैं. 10 मिनट्स ब्रेक एंड तुरंत अप टू 120 125 लेक्चर होगा. ओके चलो टेक अ ब्रेक. विनू जी ब्रेक ले लो.
चलो, welcome back once again. Till now, what we have seen, first we'll recall it very quickly. First, we have seen that the first basic rule of accounts, traditional approach and modern approach. Traditional approach, we have seen three basic rules of accounts: personal account, real account, and nominal account. Personal account talks about due relationship. Whenever there is a credit transaction, we record the due relationship. Sale is there, then debit the debtor, and purchase is there. Credit the creditor. When they settle their accounts, so debit the receiver and credit the giver. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. While passing any journal entry, when you are in the learning phase, जब भी आप learning stage में हो, एक विद्या मिला रहे हो आप लोग, आपको ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो वो टाइम पे what you have to think, first you have to identify accounts, don't pass entry directly. You are not chartered accountants or you are not intermediate students or final students. When you want to learn something, तो एक basic से जाइए. So move through your basics. Number one, identify accounts. Then you have to identify type of accounts, then apply rule, and last one is the journal entry. Very simple. Yes. तो अभी हम लोग आगे निकलते हैं. I hope everyone is now clear with all these concepts. और आपने ब्रेक के बाद आपको तुरंत मैं अभी नेक्स्ट ज्ञान देने वाला हूं, कौन सा, मॉडर्न अप्रोच. सो लेट्स राइट डाउन सेम एग्जांपल विथ मॉडर्न अप्रोच. Now do one thing, modern approach, write down modern approach. Modern approach कीजिए. Modern approach, you can write asset is equal to liability plus capital. Liability plus capital. Students, now how to write it in the modern approach? Let's understand. Number one, transaction. So don't write now transaction once again. 1, 2, 3, 4, you can write in the same way. So what are two accounts? Yes, you can see here. What are two accounts? Our started business with a cash of rupees 5,000. Correct है? So cash one account होगा and capital, cash asset में चला जाएगा and capital is also introduced. Capital is increased by 5,000. So your equation tallies. So first transaction, you can write it in the same way. Cash increase and here capital increase. Our capital increase. So first transaction over. Second one, otherwise write down transaction. Our started business. So both increase by 5,000. Second one, he purchased furniture. So traditional approach we are done with. He purchased furniture. He purchased. Don't open purchases account. Purchases account open only if there are goods. Goods मतलब लेन देन जो बेच रहे हो. Your inventory is called as goods. He purchased furniture. So furniture, one asset increase, debit, another asset decrease, credit. Asset decrease, credit. So furniture increase, cash decrease. So your equation on liability side and capital side, there is no change. Only on the asset side, one asset is increasing, another asset is decreasing. According to me, more correct approach in learning phase is traditional. What is your thinking? आपका क्या thinking है? Traditional approach अच्छा है या modern approach अच्छा है? आपको क्या लगता है? Yes, comment section में मुझे बताइए आपको क्या लगता है.
ओ माय गॉड, बहुत सारे क्वेरीज है आज तो आपके। फर्नीचर इंक्रीजेस एंड कैश डिक्रीजेस, आपका अप्रोच क्या है? नेक्स्ट वन, furniture increase, you can see here, and cash decrease. Next is paid salary. Now salary where to pose beta, salaries and cash. Cash मतलब asset decrease होगा, cash decrease due to salary, and expenditure salary. Now see, expenditure will be transferred to capital. Income and expenditure end में जाके किधर जाने वाले? Capital. Net profit will be transferred to capital. So salary will reduce your, this is expenditure which is reducing your capital. Salary है expenditure, पर उसके वजह से आपका लॉस होगा, और एक्सपेंडिचर के वजह से आगे जाके प्रॉफिट रिड्यूस होगा. प्रॉफिट रिड्यूस मींस कैपिटल रिड्यूस. सो यूर इक्वेशन में कैश रिड्यूस होगा एंड कैपिटल रिड्यूस होगा. पेड सैलरी, कैश रिड्यूस्ड एंड सैलरी किसको अफेक्ट करेगा? सैलरी एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर के वजह से योर कैपिटल इज गेटिंग रिड्यूस. सैलरी एक्सपेंडिचर which is transferred to capital, your profit gets reduced, and income के वजह से your profit capital gets increased. Fourth one, salary के वजह से your capital gets reduced. Rent paid, so cash account कम होगा, cash and rent asset कम होगा, and rent will reduce your capital. Okay, so modern approach में rent paid, cash decreases, capital decreases. Fifth number, received interest. We started with chapter number 2. Always use beta traditional approach in the learning phase. ये हमेशा याद रखो. Modern approach you can use it. Received interest में क्या बताया था मैंने? Cash increases, received interest, cash increases, and interest is income है तो capital increases. So you can check here, bank balance increases and your capital increases, or cash column increases, your capital increases. So your approach match, asset is equal to liability plus capital. So this is modern approach. Whenever you are doing revision, अभी मैं आपको revision कैसे करना है वो बताता हूँ. So homework questions 4, 5, 6. 4, 5, 6 is your homework question. ठीक है, 4, 5, 6. यस, सागर आज फर्स्ट लेक्चर ही है, चैप्टर 1 लेने वाला हूं अभी. सिमद्री इज सेइंग सर द वे यू आर टीचिंग इज रियली ऑसम. थैंक यू बेटा सिमद्री. Traditional approach is easier as compared to modern approach. I clear my basics in 11th and 12th class. Very good beta. Vishal Sharma. Chalo. I guess use all columns included. Expenditure, income. Otherwise it will become complicated for science background students. No, they can understand. Expenditure reduces capital. Income increases capital. Expenditure क्या होगा? Reduces capital. Income increases capital. साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को भी ध्यान में आएगा. ओके, इट्स अ लर्निंग फेज. दिस इज द फर्स्ट डे. दे आर नॉट रजनीकांत पीपल. इफ दे सॉल्व बाय देयर ओन, सी सीए कोर्स में खुद का थिंकिंग डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर ओन थिंकिंग मस्ट बी डेवलप इन सीए कोर्स. yes, this is not a course like, you know, I'm giving you the spoon feeding part. देखो spoon feeding होगा तो it's very difficult. See, we are accountants in future.
We are future accountants. Okay, CA means. And we are passing entry through some evidences. Evidences means supportings. Supportings means what? Salary slip, purchases का bill, sales का bill. So accountant क्या करता है? Bill through entries pass करता है. And therefore, he must be aware of all these basic rules of accounts. How many of you now can, what do you think you can correctly pass all these entries? Tell me it in comment section. Yes, sir. Now we have confidence. We can apply. First, identify accounts. Today, what we are going to do, identify accounts. We are identifying type of accounts. Then we will apply rule and then we will pass entry. Yes. कितने लोग हैं आपके ऐसे? आप में से कितने लोग हैं? Sir, chapter wise weightage is not there, Gaurav Agarwal ji. Sir, chapter wise weightage is not in CS syllabus, but almost all chapters, beta, 10 to 20, 15 marks ka weightage you can consider because there are 10 chapters and 100 marks. So every chapter has 10 to 15 marks ka weightage. Sir, please tell us exam pattern. Beta, I will tell you exam pattern. I will attempt June 2023, sir, with you, your guidance. I prepared by your class. I am very happy and confident. Very good. June 23 का भरत कुमार, बेस्ट ऑफ लक. जून 23 में एग्जाम है उसकी. बेटा पेपर 4 का शेड्यूल विल स्टार्ट इट विद इन 1 month. बेटा डोंट वरी, पहले वी विल फिनिश दिस. सर नाउ एवरीवन हैज कॉन्फिडेंस. Yes, 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 yes. Chapter 1 हम लोग now we are going to start with chapter 1 unit 1. Okay, last 20 to 25 minutes daily, one theory chapter from unit number chapter 1. Okay, so chapter 2 is more important chapter. Today I covered all basic. Now what are my expectations? देखो आपको आज के लेक्चर के बाद क्या आना चाहिए? So my expectations. Yes, first one, what I expect from you. Number 1, now can you tell me basic rules? Yes or no? Basic rules? Yes sir. बेसिक रूल सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए. देखो टिकटिकी जी के साथ कितने मिनट लगते हैं. डू वन थिंग, आज खुद के आवाज में रिकॉर्डिंग करना. खुद के आवाज में रिकॉर्डिंग करना. बेसिक रूल्स और कितने मिनट में होता है देखना. ये मेरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करके रखो और देख लेना. बेसिक रूल्स में देखो. फर्स्ट वन, basic rules of accounts. Debit personal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal or real account carried to balance sheet, nominal accounts transferred to P&L. Okay, then modern approach. Modern approach, asset minus liability is equal to capital. Asset debit balance, liability credit balance, capital credit balance. Income minus expenses is equal to profit. Income credit, expense debit, profit credit. Expense minus income is equal to loss. Expense debit, income credit, and loss is debit. And income and expenses are not transferred to capital account. Okay, so 40 seconds का revision है. Only 40 seconds. Basic rules of account समझ में आया. Now, which approach you have to follow? When you are in the learning phase, traditional approach. कौन सा approach follow करना? Traditional approach. Traditional approach में how to pass entry, मतलब personal, real, nominal. How to pass entry? Directly entry pass करोगे क्या? No, 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 big no. Identify accounts. Identify type. Apply rule and pass entry. ठीक है? Should I prepare one telegram group for you? जल्दी से बोलो. ड्राइंग्स वगैरह बेटा बाद में बताता हूं ना मोहित. आई विल टेल यू ऑल दीज एंट्रीज, ड्राइंग्स वगैरह ऑल, डोंट वरी बेटा, सब बताएगा मैं डिटेल में, सब डिटेल में बताऊंगा. यस, कमेंट सेक्शन में बताओ करना है ज्वाइन. डेली आपको फंडामेंटल्स बताऊं, आपके लिए डेली गुरु मंत्र रिकॉर्ड करके रखूंगा. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, रिकॉल. यस, चलो.
with SS. CA Foundation, batch 7 with Sanket sir. Yes. So you can join in this group. ठीक है? So I will give you daily targets. Don't worry. आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा. चलो चैप्टर 1 में आ जाते हैं. कमेंट सेक्शन बेटा, वेयर एवर यू आर गिविंग कमेंट्स, वेयर यू आर राइटिंग इज ओनली कमेंट सेक्शन है. ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अवर चैप्टर नंबर 1 unit 1. So today's homework ILU 4 5 6 is your 3 units. Tomorrow I will give you गुरु मंत्र सीरीज. ठीक है, गुरु मंत्र क्या होता है आपको मैं बता दूंगा. चलिए चैप्टर नंबर 1 पे आ जाइए. इट्स अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. Theoretical framework. First unit, meaning and scope of accounting. This is purely theory topic. जिसमें we have to understand this topic is for 4 marks. Okay, unit 1 is only for 4 marks. Let's try to understand and finish it. So थोड़ा सा fast जाऊंगा because this is a theory. You may get bored and write down this. Take a screenshots and I will tell you where to write these answers. Okay, बाद में बताऊंगा. Yes, yes बेटा. Introduction. First understand this chapter. Introduction. Mr. X earns salary. What he earns? Salary. And he purchased clothes. These are two examples of economic activity. Money means economic. These activities are economic activities. So economic activities are basically divided in 2 parts. Now what are 2 parts, sir? One is transaction. 2 parts क्या है? One is transaction and second one is event. Transaction is a business performance of an act and agreement. Transaction मतलब क्या? Any performance means paid salary, received interest, rent paid. So today you have seen 5 transactions. Started business. So these are purchase furniture. So this is transactions. Okay. Performance of any agreement is called as transaction. Performance of any act. Invest rupees 2 lakhs. Purchase goods. So these are some transactions. So you got the transaction. And what is event? So sold goods is also transaction. And what is event? Event means results. यहाँ पे क्या आएगा? Results thereof happening as a consequences of transaction. So transaction के वजह से results जो आएंगे, it is called as events. So this is your concept 1. So I earned surplus, profit. Profit is event. Okay. To earn profit, income minus expenditure is profit. It is event. Okay. So event means result. Okay. Inventories in hand, closing stock. Closing stock. I purchased 100 articles, 100 goods, and out of that I sold 80. I left with 20. 20 is what? Inventory. Inventory is an event. Inventory क्या है? Event है. So this is concept 1. Concept 1. You can write it afterwards. Take a screenshot. I will send all these screenshots on the group. Don't worry. हमारे group पे मैं भेज दूंगा. Take a screenshot. Write down.
So you will write this in your 100 pages book, but not now. I will tell you where to write this. Yes, you can write it in 400 pages में reverse में लिखना, last page से, last page to first page. So this is theory chapter. So unit 1, chapter 1, you can start with last page of your 400 pages book. 400 pages book से start करना. In starting you have journal and last page से you will have your first chapter from 400 pages book. Accounting is also called as language of business. So see, accounting means what? It is a language of business. What is meaning of accounting? So you understood it. Now what is meaning of accounting? Let's understand what is meaning of accounting. Yes, this you have to write it on 400 pages book, but last page to first page, chapter 1. Now what is meaning of accounting? Let's understand. Meaning of accounting is an art of recording, classifying and summarizing. Of what? In terms of money. Now recording means what? So today we recorded in a journal. Classifying means what? Ledger. Huh? Oh. And summarizing is trial balance. Summarizing is trial balance. Now what is ledger and trial balance? We'll see it in next couple of days. Don't worry. In terms of money, transactions and events, what we are going to record? We are going to record this of financial character and interpretation, the results thereof. See the definition. Accounting is an art. See, it is not only science. Now it is an art. Why it is art? Because every person, but style of recording is different. Style of recording is different. See, I am also teaching you journal basic rules of accounts. Another faculty will also tell you what is basic rules of accounts. Okay, 11, 12 faculties will also tell you basic rules of accounts. But how I presented it, मेरा presentation, it is my art. Okay, मैंने कैसे present किया? Now I am not giving you this in the ये module में से मैंने underline नहीं करके दिया. I have made it very pictorial presentation. पर मैंने PPT बनाए हुए हैं, which is बेटा it is an art of recording. Okay, so accounting भी क्या है? Accounting is also बेटा recording का art है. Now, how it is recording art? Yes, when we maintain books of accounts, that at time I will tell you how it is an art. Okay, you are also solving illustration 1. Your friends who have not joined my classes, okay, he has also solved illustration 1, but beta you have solved red pen से IMP question, index किया हुआ है. So this is how you keep your books of accounts of your 400 pages book. So this is an art. ये आर्ट हर एक का अलग अलग है. यूर फ्रेंड हु जॉइंड अदर क्लासेस, उसने भी क्या किया है? उसने भी लिखा हुआ है, बट कैसे भी लिखा हुआ है. बस अंकित सर का स्टूडेंट सिस्टमैटिकली लिखते हैं. इट इज एन आर्ट, ओके, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट है. याद रखना, इट इज एन आर्ट. कॉन्सेप्ट 2, टेक अ स्क्रीनशॉट. yes wait, take a screenshot. Concept 2, this is a second screenshot. 400 पेजेस के लिखना है. कॉन्सेप्ट 2, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. कॉन्सेप्ट 2, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. कॉन्सेप्ट 2, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. लिया स्क्रीनशॉट बेटा? चलो आगे. नेक्स्ट वन, प्रोसेस. नाउ हाउ अकाउंटिंग स्टार्ट्स? अकाउंटिंग स्टार्ट्स with identify event and transaction, record in journal entry. So second is पहले identify transaction, any transaction, capital introduced, paid rent, purchases of goods, transaction, event, results, record it in the journal. जर्नल इज अ प्राइमरी बुक. तो सबसे पहले क्या करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स, either modern approach or traditional approach. Then after journal, what is the next process? Transfer to ledger. So primary books is journal, secondary book is ledger. Now what is ledger? Ledger means T format. In next session, summarize in trial balance. Trial balance is the next phase, and then P&L balance sheet. So this is a process of accounting. Process of accounting. Concept number 3. Process. After meaning process. Take a screenshot. Screenshot लीजिए. You have to write this. Concept 3. Okay. Concept 3 के बाद
We will move to next. ये आ जाइए. Now concept 4, measurement. Measurement. Now what is measurement? Understand. Measurement means at what amount. What is measurement? At what amount. तो एंट्री कौन से अमाउंट से करनी है सर? मेजरमेंट. ओके, मेजरमेंट इन विच अमाउंट? कौन सी? रुपीज, डॉलर, येन, पाउंड्स. सो यूर करेंसी. Transactions and events are to be measured in the ruling currency. Ruling currency कौन सी है? देखो हमारी रुपीज है, इधर पाउंड घूम रहा है, इधर येन घूम रहा है, इधर डॉलर घूम रहा है. ओके, सो घूम रहे. सो हर एक के अपने अपने करेंसी में. ओके, सो जापान होगा तो येन में रिकॉर्ड करेगा, यूएस होगा तो डॉलर में रिकॉर्ड करेगा. यस, पाउंड्स में यूके वाले रहेंगे तो पाउंड्स में इन्वेस्ट रिकॉर्ड करेंगे. सो दिस इज अ रूलिंग करेंसी. Don't write this. Yeah, we know this. Don't write. Procedural aspect, sir. How account का process starts with, ends with. Procedural. बताओ कैसे होगा? So procedural aspect. Generating information. Sir, from where to generate information? From slip, salary slip है, invoices, cash book, बैंक पासबुक. सो कैश बुक तो मेंटेन होगा, पासबुक. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. वाउचर्स. तो ये क्या है? जहां से आपको सोर्स एंट्री होता है. व्हेन यू रिकॉर्ड इट फ्रॉम दी, व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम विच यू विल रिकॉर्ड दी एंट्री. सर ऐसा हम लोग भगवान तो नहीं है कि आपने खर्चा किया एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैठे बैठे एंट्री पास किया. अरे वी नीड सम एविडेंसेस. अभी मेरी बीवी शॉपिंग को जाएगी तो बिल लेके आएगी ना, भाई इतना खर्चा किया मैंने. सो जनरेटिंग इंफॉर्मेशन. सो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड देन यूजिंग द इंफॉर्मेशन. सो यूज करना दैट इंफॉर्मेशन. पासबुक, सैलरी स्लिप, रिकॉर्ड, जर्नल. रिकॉर्डिंग मतलब क्या? जर्नल. जर्नल. क्लासिफाइंग मतलब क्या? सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड. लेजर. सर ये ऑलरेडी किया ना अभी थोड़ी देर पहले. समराइजिंग मीन्स व्हाट? ये लिखना रहेगा. समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके. एनालाइजिंग मतलब क्या? मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन. फिगर्स इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. ओके, लिख के देता हूं. इंटरप्रिटिंग, जजमेंट्स लेना, फिर उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन. फॉर सपोज लॉस मेकिंग कंपनी होगी, यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट. इफ दैट कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. सो मीनिंगफुल जजमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द डिसीजन मेकर. सो हम लोग इसको डिसीजन मेकर को कम्युनिकेट करेंगे. सो व्हाट इज रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल. एक ही मिनट. हाँ, recording means journal, classifying means ledger, summarizing means trial balance, P&L, balance sheet, analyzing में क्या बताया मैंने? putting same figures or same nature items at one place, interpreting judgments and communicating to end user. So ये कुछ information है. So this is concept number concept 4. Take a screenshot. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट, ठीक है. यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. Now, who are users? Investor, employee, lender,
supplier, customer, government, other agency, and public at large. They are going to use your books of accounts. So they are users. So this is concept number 4 का ही part है, using the information. Using the information. Using the information. Using the information. Investor, employees, lender, supplier, customer, government, other employees. Public at large. ठीक है. Now, what is objective of accounting? Now, this is concept number 5. First, understand. Concept 5. ये लिखना है आज आपको. Concept 5. Objectives of accounting. Now, why we are doing accounting? This is also 4 marks question. What is the objective? Systematic recording of transactions. So, accounting will provide you journal. Systematic recording. Journal जिसको बोलते हैं. Ledger, trial balance. Then ascertainment of results. Results means P&L, profit, trading and P&L. Then ascertainment of financial position. Balance sheet you can find out. Objective is balance sheet. So recording, ascertainment of results, ascertainment of financial position. Providing information to users. Users को data use करते हो आप data use करके invest करते हो. Financial reports, annual reports. And then बेटा to know the solvency position. So जो कंपनी प्रॉफिट में है सॉल्वेंट है, बहुत लॉसेस में इंसॉल्वेंट होगी. सॉल्वेंसी मींस वो कंपनी आपका लाइबिलिटी पैसा देगी या नहीं देगी, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी. सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बेटा. लास्ट 5-10 मिनट्स. यस, स्टेप टू नो. नाउ हाउ टू रिकॉल दिस सी. एस मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग. ए फॉर ascertainment of results. A, ascertainment of financial position. P, providing information. And to know solvency position. To know. SAP, to know. S for systematic recording. Now take a screenshot. Concept 5. Ascertainment of results. So this is a memory technique. ये आपकी memory technique है. How to recall. S for systematic recording of transaction, A for ascertainment of results, A for ascertainment of financial position, and P for providing information and to know the solvency position. So this is the objective of accounting. Objective of accounting. Yes. हाँ. दीपांशु बोल रहा है इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होना. बेटा मेरा हिंदी आपके जितना स्ट्रांग नहीं, महाराष्ट्र से हूं, पर है हिंदी मेरा इतना भी बुरा नहीं है. अपना हिंदी बोले तो कैसा है हिंदी, एकदम आपके स्टाइल में बोलना रहेगा. तो वो पुणे वाला कौन रैप करता है, कौन है, MC स्टैंड वाला, वैसा हिंदी है. MC स्टैंड. ओके. To know the solvency position. अच्छा. Analysis, beta, you will understand it in the final accounts. Analysis means fixed asset together, then current asset together, non-current liabilities, current liabilities. This is analysis. So you put down all these in one group. Okay. Liabilities, current liabilities, non-current liabilities, fixed asset, current asset. It is analysis. Ascertainment मतलब बेटा ढूंढना. Ascertainment मतलब पता होना. चलो कोई वर्ड नहीं समझा तो मुझे बताओ. यस, MC स्टैंड बराबर है. हाँ, तुरंत चैतन्य को यही चीजें अच्छी लगती है बेटा. चैतन्य चौहान. यस, कभी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो बेटा. अभी तो करो, संकेत सर के साथ प्रॉपर पढ़ाई करो दिन भर. 4 महीने हैं, पास करवाना है आपको. चैप्टर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्यों नहीं इंपॉर्टेंट बेटा? चैप्टर 1 इज इंपॉर्टेंट. 10 मार्क का वेटेज है चैप्टर 1 को. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? नाउ अंडरस्टैंड. दिस इज कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है अभी कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? 5. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग.
Identify transaction first. Then input. Input means what? From where you will record this. From where you will record this. It is called an input. Then accounting cycle. Cycle means recording, ledger, trial balance, वही cycle. And then output. Cycle मतलब recording, posting into ledger, trial balance, final accounts, and finally you will get the output. Output means what? Your communication to the users. आप उसको पहुंचाओगे information. User कौन? Investor, employee, lenders, all are users of accounts. Okay. So this is the process of accounting. Concept 6. Take a screenshot. Concept 6. लिखना है आज नोटबुक में सब. Concept 6. This is concept 6, process of accounting of first chapter. खत्म होने को आया. Last 5-10 minutes, 5 minutes only. Summarizing मतलब ट्रायल बैलेंस. बेटा I will tell you it in the next session. ट्रायल बैलेंस 2-3 सेशन के बाद समझ में आ जाएगा. Don't worry. राजकुमार पूछ रहे हैं सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करे. बेटा बेसिक इंग्लिश लगता है अकाउंट्स में. एंड आई विल टेल यू दिस इंग्लिश वर्ड्स. डोंट वरी. जहां पे भी आपको नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी सर ये वर्ड का मीनिंग क्या है. डोंट हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चंस. एक आध वर्ड नहीं समझा तो आप मुझे पूछो. कोई इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आया तो यस यू कैन आस्क मी. Sir, schedule 11 to 1 is there. Yes, beta, but we'll need 10-15 minutes more because we have to cover this syllabus. Please try to understand. I know at 1 o'clock you are hungry now. So communication users है. ठीक है, चलो. Functions of accounting is the last question of the day. Functions of accounting, concept 7. Last question of the day. Concept 7. फर्स्ट चैप्टर के इंडेक्स की जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर. दिस इज थियोरी चैप्टर. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स एट व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड. गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन. So it is helpful. Accounts help for government regulation. So government can charge GST less on food percentage, more on your mobiles, then your entertainment. इसका जो business होगा तो government can charge you according to accounts. Okay. Next one, decision making. Accounts से आप लोग decision ले सकते हो. Function मतलब क्या? कार्य. Okay. क्या accounts के functions है? Decision ले सकते हो आप accounts के through. You can forecast your future. In past year, if I'm getting 1 crore profit, so in future, I can earn 1.5 crores profit. So forecasting. Control. You can control your expenditure. And last one, comparison is possible and evaluation is possible. MG, DF, CC. MG हेक्टर पता है ना सबको. DF, yes, DF डिसीजन और डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं मैथ्स में. एंड सीसी कैश क्रेडिट. ऐसे याद कर सकते हो. एमजी हेक्टर जैसा. एमजी डीएफ यस एंड सीसी. एम फॉर मेजरमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, डी फॉर डिसीजन, एफ फॉर फोरकास्टिंग, सी फॉर कंट्रोल एंड सी फॉर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन. सो ऐसे याद रखो. एमजी डीसी. कौन सा था कॉन्सेप्ट? 7. सो 7 कॉन्सेप्ट टुडे यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं आपने. अच्छे से लिखो. राइट इट प्रॉपरली. चलो आज के सेशन का एंड करते हैं. वी हैव सीन जर्नल एंट्रीज. आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? यस, आई वांट दिस एक्साइटमेंट नॉट ओनली फॉर दिस सेशन. ये एक्साइटमेंट हर सेशन में होनी चाहिए. प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास. ट्राई टू अटेंड live sessions. Try to attend live sessions. If not possible, at least try to watch on the same day that next session. तो आपका सेम डे पे सेक्शन अटेंड करने को देखिए. रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मत जाइए. मेरे सेशन में मुझे मैक्सिमम प्रेजेंट ही चाहिए. मतलब ऑल अदर फैकल्टीज के भी सेशन में. बट आई वांट 100%. यू नो बाद में बहुत डिफिकल्टी होता है. डू यूर स्टडी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. ओके. नहीं तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इफ यू आस्क मी सर now I want to pass CA foundation exam, it is very difficult.
व्हाट इज द सीए फाउंडेशन रिजल्ट? लास्ट टाइम ओनली 25 to 30% रिजल्ट था, तो 30% के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहे, सो आउट ऑफ 100 ओनली 30 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पास. रिमेंबर आईसीआई क्लासेस ये पूरा स्टडी मटेरियल में से वी आर कवरिंग, वी डू नॉट हैव एनी प्राइवेट मटेरियल, वी टेक व्हाट इज गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम, वो क्वेश्चंस के ऊपर वी आर फोकसिंग. सो प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास, बी पंक्चुअल, प्लीज अटेंटिव रहो, टाइम पास मत करो, प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू एनी सोशल मीडिया. ये मेरे पहले दिन पे आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत बहुत कंसिस्टेंट रहो बेटा. आफ्टर 5 years योर लाइफ विल बी बेस्ट लाइफ. एटलीस्ट ये नहीं होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 50,000 60,000 80,000 2 लाख 4 लाख 6 लाख आपका अच्छा महीने का मिल जाएगा स्टार्टिंग विथ. सो डोंट वरी, दिस कोर्स विल गिव यू, मिडिल क्लास लोगों को भी अच्छा अर्निंग दिया हुआ है. और ये ध्यान में रखो, आपके घर का अर्निंग अच्छा ही है तो भी सीए कर ही रहे बहुत से लोग, पर बेटा हमारे एक बोल सकते हैं कि जो गरीब फैमिली से आता है, रिमेंबर फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम पुअर फैमिली, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि मैं भी एक एवरेज फैमिली से था, पर बेटा आफ्टर बिकमिंग सीए आई हैव एन नंबर ऑफ थॉट्स कि ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं. आपके साथ क्लाइंट्स भी आते हैं, टीचिंग इज माय पैशन, ये मेरा पहला जॉब है टीचिंग का. पर ये ध्यान में रखो कि आप लोगों को सीए बनने के बाद बहुत अच्छा लाइफ मिलने वाला है. एटलीस्ट जो भी रोजी रोटी मिलेगी वो अच्छी रोटी मिलेगी, इतना ध्यान में रखो. सीए कोर्स को हल्के में मत लो. आप यदि आज टाइम पास करोगे 2 4 दिन 10 दिन, ये सब मन में जिस दिन आएगा ना कि आज मैंने टाइम पास क्यों किया, उस दिन आप सीए होने वाले हो. जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं यार आज मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, नहीं मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं, तो आप उस दिन सीए होने वाले हो. ये पहले दिन पे ध्यान में रखो. आपकी फैमिली के लिए आपको सीए होना है, आपके फ्यूचर के लिए आपको सीए होना है, आपके मम्मी पापा ने जो आपके लिए ड्रीम्स देखे हुए हैं उनके लिए, और आपका एक फ्यूचर जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जाने वाला है उसके लिए आप सीए कर रहे हो. बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना. आगे मैं आपके साथ रहूंगा, सो डोंट वरी, हमेशा आपके साथ रहूंगा अप टू दिसंबर. तो जितना भी हो सकता है रेगुलर स्टडी कीजिए, जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो. प्लीज 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 बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टीज को बहुत सिंपल वाले मेल मत करो. ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा. ऐसे एकदम फालतू फालतू क्वेश्चन आप उनको पूछोगे कि वहां पे दिया रहेगा कॉन्टेक्ट अस, इसलिए जो भी क्वेश्चन होंगे आप आपस में सॉल्व कर लो. बहुत ईजी वाले, डिफिकल्ट रहेंगे भेज सकते हो. कोई सिलेबस नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आया है, फीडबैक फॉर्म्स प्लीज 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 फीडबैक फॉर्म्स भरते रहो. हमारे भी रेटिंग्स होते हैं. आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपको मेरे साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर करने हैं और आईसीआई का नाम रोशन करना है. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. मिलेंगे ऑन वेडनेसडे, सो विल मीट ऑन वेडनेसडे. थैंक यू.